तो पुनः स्वागत है आप सभी भक्तों का। तो अभी तक हम लोगों ने अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 33 पर चर्चा की है, राइट। 32 और 33। आज हम 34 पर चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 34। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकिम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। akīrtiṁ cāpi bhūtāni अकीर्तिं चापि भूतानि kathayiṣyanti te vyayām कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् sambhāvitasya cākīrtir संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। akīrti cāpi bhūtāni अकीर्तिं चापि भूतानि kathayiṣyanti te कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् vyayām कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् sambhāvitasya cākīrtir संभावितस्य चाकीर्तिर् maraṇād atiricyate मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate. यूथ भी है ना आज तो. akīrtiṁ cāpi bhūtāni kathayiṣyanti te vyayām sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate. हरे कृष्णा. यूथ लोग नहीं है क्या आज कोई बोलने के लिए? कहाँ गए वो लोग? वहां पे रूम में या बाहर गए? यूथ सारे आ जाओ बोलो, उनको ही बैठो बोलो आज क्लास में. अरे होता वही है बच्चों का. हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लिखते हैं. akīrtiṁ अपयश, च भी, अपि इसके अतिरिक्त, भूतानी सभी लोग, kathayiṣyanti कहेंगे, ते तुम्हारे, अव्ययाम अपयश, अकीर्ति अपकीर्ति, मरणात् मृत्यु से भी, atiricyate अधिक होती है. अनुवाद तात्पर्य भी इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा. शिला प्रभुपाद की जय. मेरे पीछे दोहराइए. लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है. अनुवाद पढ़िए प्रभु. तात्पर्य. अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं. वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा. तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए. युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा. इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे. अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करें अपितु युद्ध में मरे. हरे कृष्ण. हरि ओम तत्सत्. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा रघुनाथान् श्रीविशाखां. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो दूसरा अध्याय गीता का सार की चर्चा चल रही है. समरी ऑफ गीता, contents of Gita summarized, the chapter name. Till now we have discussed up to shlok 33. The Krishna has started giving Arjuna
the answers for the reasons which he raised for. First reason answer was given, second reason answer was given. Now third reason answer is being in progress, right? So first reason was compassion, material compassion, and which from 11 to 30 the answer was given. And 31, 32 gave the answer for loss of enjoyment. Okay, the enjoyment, real enjoyment was to do your duty and go back to heaven, right? That is, so for a Kshatriya, fighting is the best entertainment rather than, fighting is the best joy which he could share. Fighting the war, especially this kind of war, is the best joy rather than joy with his near, loved and dear and near ones. And now, the third reason, मुझे पाप लगेगा, उसके बारे में, that is, I will acquire sin. Krishna is giving the solution for that, right? So 31, 32, 33 we have done. 32, 33 together we had done. What was 31? What was the summary of 31? Oh, 32, that is okay. No problem. So 32 spoke about, you have got the opportunity, yes. Oh, yes, you will be, yeah. We will attain heaven. Heaven, yes. So these were the three pros of participating in a war, right? Religious war. And what was religious principle? Swadharma, right? So one has to never forget his Swadharma and continue to do his Swadharma. This was the three pros. And what was the cons? That is 33. What was the, if you don't fight, what will be the cons? You will lose your fame. You will lose your? Yes, lose your Swadharma, lose your Kirti. Yeah. Paap, you will acquire Paap. Okay? You will incur sin, right? You will acquire Paap. So these were the three pros and three cons of not following your Swadharma, right? So, और भी कुछ याद था? और भी कुछ याद है? और भी कुछ हमने चर्चा की? हाँ, कर्म कांड. This section from 31 to 38 is karma kand, and we explained karma kand also, right? So what is karma kand? Your dharma, Mhm. karma kand. Hmm. And in this karma kand, you have a आपकी कोई अगर इच्छा होती है, जिसकी पूर्ति होती है. Yes, exactly. जब उसको आप कनेक्ट कर देते हो कृष्णा से या भगवान से, तो फिर वो कर्म योग बनता है. Yes, पहले ये exactly. कर्म कांड है. Yes, exactly. कर्म कांड, अभी कर्म कांड चल रहा है, बिकॉज कृष्णा अभी फायदा और नुकसान के बारे में बता रहा है. तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा क्या फायदा है, तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा क्या नुकसान है. तो बेसिकली ये कर्म कांड है. तो कर्म कांड के अंदर आप कर्म करते हो तो फल की इच्छा रखते हो और फल तुमको मिलता है. तो ना कर्म कांड आपको अपना ड्यूटी करना है, फल मिलेगा, फल की आसक्ति से तुम कर्म करते हो. और जैसे प्रभु ने कहा, आगे चलते चलते हम कृष्णा को बीच में रख के करेंगे तो उसको योग बना देंगे और फिर निष्काम भाव से हम कर्म करते रहेंगे. तो ये निष्काम कर्म योग पे जाएगा. तो इस प्रकार फ्लो होता है भगवत गीता. तो कर्म कांड का सेक्शन चालू है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेदास ऑल्सो, राइट? So Vedas deal with this three topics, which is Karma Kand, Upasana Kand, and Gyan Kand. एक second. Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji. Did you get? Yeah. I think power stations are in the side, right? Yeah. Power station, yeah. But you have to come from the back side, Mataji, entry. Yeah. You can just cross the power stage gym, the same building, but in the reverse side, yeah. Yes, Hare Krishna. Then you will find the lifts. Yes. Hare Krishna. कोई ओभूर से कोई माता जी आई. So we were discussing about Karma Kand. So Karma Kand, Upasana Kand, and Gyan Kand. These are the three stages which Vedas deal with. That is why it is called Trividya. And dealing with these stages, we gradually progress in life and
the purpose of realizing these three stages is mentioned in hello. No, any door you can, this side also you can enter, but you have to come on 401. Yeah, correct. So उसका रिजल्ट क्या है, जो है सो भगवान को बीच में रख के कार्य करना। तो धीरे धीरे हम अपने, एंड आई गिव द एग्जांपल आल्सो, कि व्यक्ति को मीन्स लाइक बच्चे को कोई मदर जल्दी उठाती है और बोलती है तो उठ के पढ़ाई कर ले, तो वो उठ के पढ़ाई करना शुरू करता है, डेली सवेरे उठ के पढ़ाई करना शुरू करता है। ये उसको रिचुअल में लेके आती है, दैट इज कर्मकांड। ठीक है, रिचुअल में लेके आना किसी को। सो हम लोग सबको ऐसे ही रिचुअल में लेके आते हैं, आइए क्लास सुनिए। तो रिचुअल में आने के बाद में आपको खुद को पता चलता है, नहीं वाकई में सवेरे उठना और पढ़ना और जॉगिंग करना ये काफी अच्छी चीज है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। यू रियलाइज फायदा मिल रहा है मेरे को, दैट इज देन यू स्टार्ट डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, आई विल गेट गुड, यू नो। तो इसके लिए उपासना कांड, तो ना यू कम इनटू दैट काइंड ऑफ है। तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, ये सब होता है। और फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं और लाइफ में ऐसा जगह सेटल होता है कि भाई मुझे अब कुछ भी हो जाओ, मुझे तो ये करना ही है, चाहे मेरी तबीयत ठीक रहो या नहीं रखो, मुझे तो उठ के मुझे जल्दी उठना है, जल्दी से पढ़ाई कर लेना है, अपना कार्य जल्दी जल्दी सुबह निपटा लेना है। तो देन इट कम्स इनटू दैट रूटीन, जो रिचुअल के तौर पे लेके आए थे, यू गेट इट इनटू द स्पिरिचुअल स्टेज कि मैं तो ये अब चाहे मेरी तबीयत रहो नहीं रहो, आई हैव टू डू दिस। तो वो योग में ले आते हैं, अब कर्म योग टाइप में। सो दैट इज वेयर इज द स्टार्ट ऑफ भगवत गीता। हरे कृष्णा। तो उसी सिलसिले में लास्ट टाइम 3 प्रोज और 3 कॉन्स बताए थे, और आज जो है सो उसी कॉन्स में से, उसी प्रोज में से कीर्ति नाम बताया था ना। आप अपने स्वधर्म खोदोगे और कीर्ति खोदोगे, उसी कीर्ति के ऊपर थोड़ा आज भगवान एक्सपैंड कर रहे हैं। akīrtiṁ cāpi bhūtāni kathayiṣyanti te vyayām sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate। तो अकीर्ति, लोग सदैव तुम्हारे अपयश के बारे में वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो so as I said, 3 pros and 3 cons, and after that now he is describing upon the kirti, which is very very important for a क्षत्रिय, right? So वैसे ही ब्राह्मण के लिए है ना, तपस्या ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे akīrtiṁ cāpi bhūtāni, कीर्ति is what we call it in English, fame, yeah, good reputation, fame. And akirti is opposite, infamy, right? We call it as infamy. Akirti is bad reputation, infamy. Bhūtāni is again living beings, right? All the living entities we call as bhūtāni. So akīrtiṁ cāpi bhūtāni, yeah, so you will gain infamy. Kathayiṣyanti te vyayām. Katha means story. People will talk stories. People will talk a lot of stories. Kathayiṣyanti te vyayām. They will talk stories about you, and te vyayām. Te vyayām means continuously. They will talk non-stop stories about you. होता है ना, एक बार, आजकल तो बहुत चलता है कुछ भी, एक क्या बोलते हैं उसको हम, गॉसिप नहीं, वायरल, आजकल वही है ना, ट्रेंड पकड़ लो, तो बस ट्रेंड के हिसाब से वो फिर चालू रहता है। हरे कृष्ण माता जी, वेलकम। श्री रंजनी माता जी, राइट? हरे कृष्ण, वेलकम माता जी। सो akīrtiṁ cāpi bhūtāni kathayiṣyanti te vyayām। सो ये वर्ड, नाउ कृष्णा इज यूजिंग दिस ते अव्ययाम। अव्ययाम मतलब नेवर एंडिंग, राइट? नेवर एंडिंग। पहले अव्ययाम हमने कब किस में यूज किया था? आत्मा के लिए यूज किया था, है ना, जनरली आत्मा के लिए यूज किया था। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ओवर देयर? आत्मा अव्यय अर्थात it's forever, right? It's forever, right? So here also he is saying kathayiṣyanti te avyayām. People will talk about your infamy in form of stories, and they will never end. Avyayām, they will keep continuing. एक ने 2 को बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 ने 5 10 को बोला, और वो ऐसे चलते रहता है। तुमने सुना ये हुआ था, अरे तुमने सुना ये हुआ था। तो एक बात जिसको खत्म हो सकती है, न खत्म होते उसको लंबा खींच गए, अव्ययाम। उस सेंस में
अव्ययाम यूज किया यहाँ पे कृष्ण ने, सो नेवर एंडिंग। सो आत्मा नहीं मरती है, एवरलास्टिंग है, इसके लिए अव्ययाम यूज किया था, लेकिन लोग यहाँ पे कथा कंटिन्यूस बोलेंगे, ये अव्ययाम हो गया। ओके, सो इसलिए मैं बोल रहा था आजकल नरेटिव्स का जमाना, आई वाज नॉट गेटिंग दैट वर्ड, राइट। एक नरेटिव बना दो तो नरेटिव के ऊपर बात चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। अब अपने ग्रुप में भी बहुत कुछ हुआ था, है ना। तो इसमें तो नहीं, इसमें तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, इसमें से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी अलाउ करता हूँ। बट हमने देखा था मिनी भारत में, इसमें दूसरे कई अन्य ग्रुपों में कई सारे लोग आपस में टकराव कर ही रहते हैं ना, क्योंकि एक थ्रेड पकड़ लिया और उसके बारे में जिनकी जो मर्जी मैं बोलते रहते हैं। तो यही मीन्स लेकिन ना, इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि कोई एक नैरेटिव ले लेता है, उसके बारे में शुरू हो जाता है, लोग उसको बार बार दोहराते हैं बस। तो राम जी के बारे में भी लोगों ने बहुत कभी कभी कुछ गलत समझाया था, है ना, गलत बोला था। क्या बोला था? अरे भाई कैसे किंग है, अपनी पत्नी को भेज दिया, अग्नि परीक्षा ले ली अपनी पत्नी की, गर्भवती थी, अपने घर से निकाल दिया। बोलने वाले बोलते भी है ना, जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, नास्तिक लोग हैं, वो लोग ये कहानी वैसा गलत करना चाहते हैं। परंतु क्या हुआ, उसका कोई असर हुआ? राम की कीर्ति के आगे यदि उसकी अकीर्ति फैलाने लगे, वो डज दैट स्टे? इट विल नेवर स्टे। राम की कीर्ति के आगे वह एकदम फीकी पड़ी, और उसका कभी मीन्स लाइक लोग उसको याद में नहीं रखते जितने राम की कीर्ति को याद रखते हैं। ठीक एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट उल्टा रावण को ले लीजिए, मेनी ऑफ देम प्रेज रावण, राइट। भाई वो तो ब्राह्मण था, उसने तो नहीं, पहले इधर उसने, रावण था, रावण ब्राह्मण था, उसने कभी सीता को हाथ तक नहीं लगाया, वो अपने घर लेके गया। अरे भाई मैंने बोला ठीक है, घर लेके गया तो क्या सीधा अपने आप, सीता अपने आप चल के गई थी उनके साथ में, उसको खींच के लेके गया ना। तो कई बार लोगों ऐसा रावण को, बस उसको ज्ञानी था, ये था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कीर्ति आज सुनने में देती है। लोग आज भी उसको अन्य क्या बोलते हैं, जब उसको आज भी उसकी एफिजी क्या बोलते हैं, उसके रावण के पुतले को आज भी हम जलाते हैं, दहन करते हैं, रावण का दहन आज भी हम चालू रखे हैं, है ना। कहने का मतलब वॉट एवर वॉज इज नेगेटिव, उसको हम आज भी जलाते रहते हैं। सो अकीर्ति एंड कीर्ति, it just does not go. If it is real kirti, it will remain permanent, and if it is akirti, you wrongly spell akirti about that particular person, that will not stay. And for a akirti person, if you keep on saying kirti, that will also not stay, है ना। तो कीर्ति अकीर्ति ऐसे इस प्रकार है। इस्कॉन के बारे में भी ले लीजिए, मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ कीर्ति अकीर्ति के इसमें डिफरेंसेस में, बाकी फिर हम इस्कॉन के बारे में लोग बहुत कुछ अकीर्ति फैलाए थे शुरू शुरू में जब आए थे 20 साल के। अब जैसे है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, जयपताका महाराज है, ये सब क्या 20 साल की उम्र में इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर लिया, उनसे थोड़ा बाद में ज्वाइन किए होंगे महाराज ने, तो 67 में ज्वाइन किया, तो कुछ सालों बाद में महाराज ने ज्वाइन किया। तो लोगों को ये लगने लगा, अरे भाई ये तो इस्कॉन तो बड़ा ये कर रहा है, सारे सारे बच्चों को ले आके सन्यासी बना दे रहा है, ये तो एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जीने का मतलब मकसद है उनको भुला दे रहा है, भाई मरना है बोल के तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारी गलत अकीर्ति, और कृष्ण ही भगवान है बोलता है, जबकि कृष्ण एक मायावी ग्वाला था। Like, so many misconceptions were spread when ISKCON, but all those did not work out, right? And ISKCON is still today, okay, people still have misconceptions, but ISKCON is progressing for its own purpose. So similarly, Arjuna, so it is becoming glorious day by day, right? ISKCON. So Arjuna, you will also lose your gloriousness, that is your kirti. And he said, आगे क्या बोल रहा है? sambhāvitasya. Sambhāvitasya means one who has means sambhāvitasya means sambhavata किसी ने, means one who has given you cha akirti, one who has given you this all this respects and saman cha akirti, for your acting this way in a akirti way, cowardly way or infamy way, they will keep on saying about you. maraṇād atiricyate.
that keeping on saying will be worse than death for you. सामान्य व्यक्ति के लिए अपना सम्मान खो देना is more than death. It's better to die if you cannot fight. So for glorious people, infamy is more worse than death. So infamy is uchyate. That is what Krishna is saying here. Okay, so why is he saying all this? That, you know, if you don't fight and you will lose your kirti. Instead, it is more, it is better to lose your, it is better to die than to get you akīrti. Why? Because in 1.45, Arjuna asked, you can open 1.45, chapter 145. What did Arjuna ask? Dhartarashtras rane hantyus tanme kshemat taran bhavad yadi mama pratikaram. Right? Yeah, what was the shlok? Shastra Panaya. Weapons in hand were to kill me unarmed, unresisting. So it is better that the sons of Dhartarashtra, that is Dhritarashtra, kill me and I will be unarmed. In the battlefield, that I don't want to fight, I have left my weapons. Let the sons of Dhritarashtra kill me. I want to be, so I will be unarmed. So for that, Krishna is responding here, it is not possible. If you leave your Shastra and wait only for the Dhritarashtra's son to kill you, then you will suffer more than the death. Because they will talk about your akīrti, that this fellow, he was such a glorious Kshatriya, he did not fight in the war, he left the war, he ran away from the war, right? So you will suffer more than death. So now see how death is being described as honor here. Right? We don't take that death as, we take it as something which is very, okay, it is like an infamous incident which has happened in our, unexpected this incident has happened in our house. But see how death is being glorified as honor. And that's what I was saying when His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj story, when I said you in the starting, that Krishna Balaram temple Pujari got that swapna, so that, calling for his photo to be kept in this because he wants to take him to do Gocharan. तो गोचारण लीला में उनको सम्मानित करने के लिए उनको किस प्रकार उनकी कीर्ति और एस्टैब्लिश की. कोई इस्कॉन वाले करते तो समझ में आते, इस्कॉन वाले तो अरे भाई ठीक है, उनका जो भी दिन है हम तो उनके पूजा पाठ करते हैं, परंतु ये तो इस्कॉन वाले नहीं थे, नंदगांव के पुजारी और थे. So how he is describing death as an honor. So it's very important for a Kshatriya, this honor. It's very, very important for a Kshatriya. And that is why, we need to understand this. So what we have to understand here is the difference between three things: honor, pride, and arrogance. We have to discuss three things: honor, pride, and arrogance to understand this shloka. Okay? So there is a slight difference between them. Okay? Of course, there is a understanding difference between, but other way around, more or less they convey the same meaning in different forms. Right? How many of you agree? Slightly different, sir. Slightly different, right? So that's what. So we have to understand this difference. That's the whole thing, right? So all these sound similar, but there is a very slight, subtle difference. And what is that difference? Honor is used for what? Respect. So it is what? It is a positive sense, right? Honor is used for giving a positive aspect to the act which you are doing, right? Hum log abhi, we are come to karma kand. So, we are talking about doing our duties, svadharma. So, acting upon the honor, is something which is positive sense. So, we honored the freedom fighters, right? That is what we say. We never say we dishonored the freedom fighter. Right? We say we honored the freedom fighters. So, that is used in positive sense. Pride is used both in positive as well as negative sense. Like we take pride in developing the city, like Jeddah, they take pride in developing some biggest tower. So, it's okay. So they have developed the city, and that is the reason for which because they have done such act, which gives them the positive sense of
ownership, right? Achievement. Yeah. So that is the reason they said the pride is being taken in the positive sense. But at the same time, this pride can also be taken in the negative sense. Oh, तो आज माता जी भी, आप भी, दो आपका, तीन, हरे कृष्ण, हरि 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 हरि, श्री सच्चिदानंद प्रेमानंद निताय भगवान की जय. So राधा दामोदर भगवान की जय. तो प्राइड दोनों सेंस में लिया जाता है, बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस, राइट? नेगेटिव सेंस में कैसा? हाँ, उसको देखो भाई, उसको तो बहुत घमंड हो गया है अपने अचीवमेंट का, अहंकार आ गया है उसमें थोड़ा, है ना? सो वी टेक उसको, मतलब, और वो अपना प्राइड दिखाता है, तो लोग बात करते भाई ये इसका प्राइड जरा इसको अहंकार में, इसके अहंकार में झलक रहा है. सो दैट वे पीपल टॉक अबाउट समथिंग. तो इसीलिए, बिकॉज यू नो दिस ऑनर वाज अ प्योरली पॉजिटिव टर्म, pride is partially positive and partially negative. It can be used in both senses. Negative in the sense like उसका बहुत घमंड दिखा रहा है भाई, एक दिन नीचे आके गिरेगा, इस प्रकार नेगेटिव सेंस में भी बात किया जाता है. And arrogance, I was telling the third word, right? The third one is arrogance. Arrogance is always spoken in terms of negative aspects, right? Arrogance is always negative. So nobody would like to say, take the, as they take the pride in developing the city, nobody will say, I developed an arrogance in developing the city. So, you know, that is a negative sense. So arrogance is always undesirable for us because it is always gives us the negative aspect. So arrogance is undesirable, but pride is necessarily, pride is desirable partially. So pride can be positive as well as negative, but pride as an achievement is good, and honor is always desirable. Honor is always desirable. When you get initiation, जब माता जी को initiation मिला, so what, she was honored by Guru Maharaj. Okay. Now she would take pride in accepting that initiation by giving vows to the spiritual master that, you know, I will follow 16 rounds, I will follow 4 regulatory principles. She gives vows to Guru Maharaj. So that is pride in accepting the initiation. You cannot lose that honor given to you or pride by acting loosely. You cannot lose that pride by acting loosely or by not following the regulatory principle. Okay. So your sense of honor will be always inspiring you to keep the pride in positive sense. Okay. Your sense of honor will always keep that pride to be honored in positive sense, that you should always honor the vows which you have given. But you cannot become arrogant. अब तो मेरे को इनिशिएशन मिल गया, कौन देखता है कौन मेरे सामने शास्त्रार्थ करता है. You cannot be arrogant. आप, मेरे को कृपा मिल गई है. No, that is not at all desirable. So, you know, including me, I'm telling you, that is not at all desirable. That is not desired for. So, इसी arrogance, pride, so ये सब किससे अपने को कीर्ति से. These are all connected with our कीर्ति, right? So your when somebody gives you your honor, or means when somebody gives you honor, you get a sense of pride, which should not end up in a arrogance. Okay, so in this way, these three are connected. So Krishna was also put into one infamous situation. Yeah. Talking about this, I was just reflecting. When I was working in the UK, our CEO was there, and he was quite a Catholic, very principled. So he talked about, you talking about this, right? He talked about personal values. So he used the word ego, right? Yeah. He says you have small ego, strong ego, and big ego. So see, if you are in a, by saying he has a certain position. Flip side you are talking about, yes. Yeah. If you're like Kshatriya, of course, he has a certain position. So, of course, you should take, you should not have a small, you should feel proud that. So you should exactly. You should not have small ego. Yeah. No, the strong ego is, sorry, I have a position, sorry, I deserve that respect. So you should demand that respect in the rightful way. So this having a strong, never have small ego. Yeah. Have strong ego, which is your position. Yeah.
But then big ego is bad. That is very arrogant. So Exactly, I'm the boss. exactly. And So just- that strong ego, that strong ego will comes through how? When you discharge your duties, Yes. right? When you discharge your rightful duties, right? So when you discharge your duties in a rightful manner, then that thing will be pride. You can take pride in you. Krishna was also put into this situation. Here we talking about ownership, not the ego, but there's a much difference between the Yeah, it's okay. ownership and Positive ego is talking about, like, you know, pride. हमने बोला था हमको भाई हमने ये सिटी बनाई है या फिर हमने बिल्डिंग बनाई है, मुझे गर्व है, तो गर्व करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बिल्डिंग बनाई है, गर्व है, परंतु वह गर्व आपके अहंकार में नहीं बदल जाना चाहिए। इसको इस तरह से कर सकते हैं, हाँ, I did it, only I can do it. ये difference. हाँ, exactly. That is also one point. I did it, only I can do it. Only I can do is अहंकार. So, Prabhuji, I think you're right. See, he used the word ego, but you can say pride. Pride, yeah. So it is positive. I was telling flip side बात कर रहे हैं, but I understood the meaning. That's what I said. He used the word, like I said, he's an Irish guy, so he used that word. But Yeah. the principle is, okay, it can be positive As well as, and negative. yes, that's the reason pride comes in both swings. And honor definitely comes for positive, because you don't honor a dishonest person. Honor comes always for a positive person. And arrogance is always discarded. This pride thing swings between both of them. And that is where we have to understand based on our swadharma. We should not get into the negative thing. We should take pride that I have got initiated and keep our vows to follow that pride. और वो घमंड में नहीं बदल जाना चाहिए। तो कृष्ण को भी एक बार ऐसा कीर्ति लूज करने का सिचुएशन फेस करना पड़ा। Anybody remembers anything? Krishna was also put into this phase where he had to lose his वो छोड़ के क्या नाम है द्वारका नगरी। No, हाँ, okay, नहीं, but then yeah, but that was for a different particular purpose. Yeah, उसके अंदर उनका हाँ, लेकिन हाँ, रण छोड़, yeah, exactly, रण छोड़, yes. The wives of Shilpa, I mean, he has. Yes, that's what exactly. Yeah, Rukmini and all those. तो नहीं, एक और नहीं, वो तो फिर भी उसका उनका यश बड़ा ही बड़ा है उसमें। इवन रणछोड़ बन के भी उनका यश बड़ा ही बड़ा था। फिर भी उनको जो रुक्मिणी को भगा के लेके गए थे उसमें भी उनका यश बड़ा मीन्स लाइक his fame increased. Even he stole from his house, his fame increased. I am talking about a situation where Krishna was put in a situation where he was about to lose his fame, but he could overcome it. ना तो ठीक है, वो तो लीला ही है। How many of you remember this the Shamantaka jewel story? Right? Shamantaka jewel. Anybody heard about it? Shamantak Mani. Jambavanta, exactly. Now you will remember, right? So this story goes in this way. Like they were already in Dwarika. Krishna had already run away from Brinda, that is from Mathura, where because he used to always आक्रमण झेल के परेशान हो गया था। वो बोला कि इसके मदर को मैंने वचन दिया कि मैं इसको माफ करूंगा, 100 गुना इसके माफ करूंगा, तो मैं बेटर है अपना राज्य शिफ्ट कर लेता हूं। एंड दे शिफ्टेड टू द्वारिका। सो व्हेन ही वाज इन द्वारिका, all his praja was very happy. And one of the praja member was Shatrajit. His name was Shatrajit. Okay. And he got through some means of his austerity or his tapasya, he got a jewel from Surya, that is Lord Sun. उसको ज्वेल को मणि बोलते हैं हम लोग, हिंदी में मणि बोलते हैं। ओके, सो ही गॉट अ मणि which was having lot of effulgence, and that money he used to wear, and he came. So people thought, where is this sudden effulgence coming from the city? Morning he wore that money, and he started coming when the sun has also not risen so high. So people thought, how the sun is walking in the street, so maybe Lord Sun has come. Let's go and tell Krishna. So they go and tell Krishna, Lord Sun has come in our area and he's walking. So then Krishna realizes and he says, no, it is not the Sun Lord who has come. Surya Dev nahi aaye. He is Shatrajit. Maybe he's got the Vardhan from Surya by getting the money, Samantak money. So then they all see, then naturally he's wearing some kind of locket in his neck, and that is shining
And based on that, so much of effulgence is coming. And it was not only the effulgence, but that money has a capability. What was that capability? That it could produce 1 bhara of gold every day. Now, bhara is a technical term, and that is 1 bhara is equal to 16. 1 bhara is equal to 16 pounds. 1 bhara tola we call it. 1 bhara tola. एक तोला पता है, भारतोला एक अलग वर्ड होता है. ओके, सो 1 भारतोला is equal to 16 pounds. That much of gold every day, which is 16 into 11.66, right? Ek tola is equal to 11.66 grams, not 10 grams, right? 10 is today fixed for our easy purpose calculations. But tula was 11.66 grams or 12 point something odd. So this tula bharam, it used to produce 186 pounds of gold every day, which is equal to 85 kgs every day. It's not small amount, right? 85 kgs of gold every day being produced by that jewel. So, and he was like, naturally once gold has come, everything will come. So he was walking with that and then he started becoming rich. So Krishna called him one day and said, see, you're keeping this costly jewel with you, walking in the streets, wearing it with the pride. It's a very costly jewel and it is used for a particular purpose. What do you want? You want gold out of it? Then deposit this in the treasury of the kingdom. You will be given the gold which is produced daily till your lifetime. But keeping this, you could fall in danger, dacoits may come, loot you, they may, harm you, or it could happen anything. So होता वही है ना कि कोई यदि ऐसी चीज हो उसको हिफाजत से कहाँ रख सकते हैं. पहले के जमाने में तो बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे, तो कृष्णा said, our treasury department is there. So you deposit there and whatever is produced, we will give you. But then he thought, no, Krishna wants to steal away this jewel. I will not give. I will keep it with me only. And he started telling stories. Krishna is wanting to steal my jewel. Krishna is wanting to take my jewel. Krishna said it in openly only. Everybody had heard also. Because I had said it in the darbar. Because, you are walking this way, you will be in trouble tomorrow. He did not listen. He kept it with him. So, okay, Krishna said, okay, fine. Whatever you decide, Krishna will always say, okay, right? Sitting in your heart as Paramatma, he'll always say, okay. And what happened next day? Okay, some days went on. His younger brother, Prasanjit, इसका जो सत्राजित का छोटा भाई था Prasanjit, he took that jewel and was walking one day. And he went towards the forest. In the forest, suddenly there is a shine. So the lion got suddenly surprised. What has happened? He saw somebody shining is coming. So he could see a man coming and he said, what is this shining he's wearing? They were also getting distracted. So he pounded upon him and he killed him. And that money, when he killed him, okay, that money was laying there. And then it was near his paws. And from there, Jambavant happened to pass by. He saw this something shining is there near the paws of the tiger and he wanted to take, but the tiger doesn't give. So he had to fight with the tiger, kill the tiger. He was very strong, right? बहुत बलवान थे. वो मणि लेके अपने घर चले गए और अपने घर में जाके अपने बेटे के गले में डाल के उसको पूरा जो गुफा में रहते थे. He used to stay in a very dark place, so in a den. So in that place, that got illuminated and everything, and he was playing. Prasanjit did not return and Shatrajit got worried and he thought Krishna might have killed my brother and taken away the Shamantak jewel. And he propagated that, this, क्या बोलते हैं इसका? Trend. Viral कर दिया उसको. क्या बोला अभी कुछ बोला था ना वर्ड में भूल गया वर्ड. narrative बना दिया कि Krishna has stolen my jewel. And Krishna also heard. Now people really started talking. Krishna के पास क्या कमी थी, बेचारे को क्यों ऐसा मार के ले लिया, पता भी नहीं मर गया है लोगों को, लेकिन बोले इसको गायब कर दिया, उसका ले लिया. People also started talking. And then Krishna came to know, oh, so they have started
पुटिंग मी इनटू ट्रबल, मेरे ऊपर अकीर्ति फैला रहे हैं, मेरी कीर्ति के ऊपर नुकसान हो रहा है, देन आई हैव टू प्रूव इट करेक्ट. So he said, okay, whatever be the case, I will find out your jewel and I will return you back. I take that as a serious challenge. I have not taken, but since you are telling and now all my people are telling, so I will find out your jewel and then return it back to you. Krishna goes and उनको तो पता है सब, शेर ने मार दिया है, शेर ने उसको मार दिया. जाते हैं वहां पे सब गांव वालों को लेके जाते हैं, देखो बोले इसकी बॉडी पड़ी है प्रसेनजीत की. ओके बॉडी मिल गई, लेकिन मणि नहीं मिला, तो मणि भी ढूंढते हैं. पैरों के निशान और बालू के निशान देख के, रीछ के निशान देख के वो एक गुफा के पास जाते हैं. तो बोलते हैं अब तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ. ठीक है, कृष्ण अंदर जाते हैं तो जामवंत ऑलरेडी बच्चे के गले में रहता है, और जामवंत जी उनको देख के ऑलरेडी देखते हैं कौन आया घर इधर. उनके दोनों के बीच में युद्ध होता है. वो बोलता है मुझे मणि चाहिए, कृष्ण बोलते हैं, जामवंत जी बोलते हैं मैं नहीं दे सकता, ये कोई ऑर्डिनरी मणि नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं दे सकता. एंड दोनों के बीच में बहुत सारा युद्ध होता है काफी दिन तक. जामवंत जी भी बहुत बलवान थे. उन्होंने रामायण में एक बार मीन्स जब रामायण काल में एक बार भगवान से मल्ल युद्ध की इच्छा जाहिर की थी. वह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान इस काल में वे कृष्ण बनकर आए और उनके साथ मल्ल युद्ध कर कर उनको हराया नहीं. वो भी हरने वालों में से थे, उन्होंने बहुत कोशिश की फिर, लेकिन वो रियलाइज हुए, बोले मुझे तो हराने वाले सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं जिनके साथ लड़ना चाहता था उस समय वो लड़े नहीं थे, और मुझे तो वही हरा सकते, और कोई हरा नहीं सकते. तब वो एकदम रियलाइज करता है और उनको फिर प्रणाम करता है, बोलता है कि हे नाथ आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको, आप मैं जो सोच रहा हूँ आप वही हो क्या. तब देन ही कम्स इन द राउंड फॉर्म एंड सेज यस आई एम द सेम पर्सन. एंड देन उनको प्रणाम करते हैं, एंड देन सेज ये तो सारा आप ही का है, अब आप ही लीजिए, क्योंकि सारा सब कुछ जगत आपका है राम, तो मैं क्या करूंगा, ये मणि लेके लीजिए, और साथ में साथ मेरी ये बेटी है जिसको मैंने बड़ा किया है, इसको भी मैं आपको ब्याहता हूं. ऐसा कर कर जाम्बवंती उनकी बेटी का नाम था. 8 मेन पत्नियों में से एक जाम्बवंती भी थी, जो जामवंत से कृष्ण ने मीन्स ये श्यामंतक मणि के साथ में लेके आए थे. तो मणि तो लेके आए और फिर प्रसन्नजीत को दे दिया. प्रसन्नजीत ने जैसी लिया मणि, उसको लज्जा आ गई कि मैंने जबरदस्ती ही कृष्ण के ऊपर अकीर्ति फैला दी थी, जबरदस्ती झूठ फैला दिया था. उसका रियलाइजेशन करने के लिए क्या किया उसने वो मणि तो दे दी उधर उनको, ओके, और अपनी बेटी को भी कृष्ण के साथ में ब्याह दिया. हाँ क्या बोलते हैं, सत्यभामा. सत्यभामा, अपनी बहन सत्यभामा को उनको दे दिया. एंड सत्यभामा वाज नन अदर देन भूमि देवी. सो दिस वे कृष्ण गॉट मैरिड टू सत्यभामा एज वेल एज जामवंती टुगेदर. तो ऐश्वर्य तो आया ही आया मणि के रूप में, लेकिन साथ में ऐश्वर्य की दोनों देवियां भी आ गई. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण के पास तो लौट के आना ही आना है. तो कृष्ण ने बहुत पहले ही कह दिया था तू ये राजस्व में जमा कर दे, तुझे जो सोना चाहिए मैं देता रहूंगा. नहीं सुना तो हुआ वही, उसको उसके भाई की प्राण गंवाने पड़े. हो सकता है वो यदि नहीं भी गंवा सकता था. तो अपने ऊपर लगी अकीर्ति को कृष्ण ने हैंडल कर लिया. अपने ऊपर लगी अकीर्ति रणछोड़, उसको भी उन्होंने हैंडल कर लिया, उससे उनका नाम ही पड़ा रणछोड़. और इधर भी उनको जो है सो 2 पत्नियां मिली. तो वो जो भी कार्य करते हैं उसमें उनकी अकीर्ति तो नहीं बल्कि कीर्ति बढ़ती है. लेकिन अकीर्ति का सिचुएशन आने पर उन्होंने तो हैंडल कर दिया. भाई मैंने तो हैंडल कर लिया, नाउ तू समझ अर्जुन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर ए ग्लोरियस आर्चरर, राइट? यू कैन नॉट हैंडल दिस, आई हैव हैंडल्ड दिस, यू कैन नॉट हैंडल दिस. आप ये कर नहीं सकते, आप इतना हैंडल नहीं कर सकते. और सोचने वाली बात है कि कृष्ण कौन है, जगत के पति, राइट? ब्रह्मा, शिव आदि सभी ने उनका गुणगान किया है, नारद सभी ने कृष्ण का गुणगान किया है. सो कृष्ण इज मोर ग्लोरिफाइड. बट टुडे ही इज बिकम ए चैरियट ड्राइवर ऑफ Arjuna. So imagine Arjuna was not glorified. He was also a glorious person. Okay, he handled so many wars alone. Drupad के साथ विराट युद्ध, all those he had handled it all alone. Nobody, no single helper. So, and then today you are chickening away from not fighting this yuddha, which will be very dangerous to you. It will give you such a dishonor that you cannot think about it. So here Krishna is using his power
of honor to impel Arjuna to act honorably. Okay? And that is what is the strategy of the overall Varnashram Dharma. We have to understand that. And that is what is the strategy of overall Varnashram Dharma. And that's why in general, the society also adopts that strategy. Society also adopts that strategy. Society also honors, Samaj Sudharak award देते हैं, शौर्य चक्र देते हैं, समाज यही देता है ना. So that is nothing but it's an overall strategy of the Varnashram Dharma which they honor. And the same society also names and shames a person who has derided such kind of activities. Right? भाई समाज में ऐसा उसने गलत कार्य किया है तो उसको शेमिंग का काम भी करती है समाज. राइट? पुलिस है, करती है कि नहीं? पोस्टर लगा देती है 10,000 या ना. 10,000 में तो आजकल कुछ नहीं होता है आजकल, लेकिन वो भी पोस्टर भी लगाना छोड़ दिया है. हाँ, बांग्लादेश का. यस, या नोबेल पीस प्राइज. तो आजकल तो पोस्टर भी लगाने नहीं देते हैं कि भाई ये भाग गया है, इसको पकड़ने 1 लाख मिलेंगे. वी डोंट गेट राइट, वी डोंट सी दोस पोस्टर्स. राइट? हाँ, व्हाट्सएप में यार इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू ई. क्यों नहीं? अगर वो आज पोस्टर्स लगा देते हैं तो क्या होता है? मानवाधिकारी वाले उठ जाते हैं मानवाधिकार वाले उठ जाते हैं. भाई, यू आर इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी बाय पुटिंग हिज पोस्टर एंड शेमिंग हिम. मानवाधिकार वाले उठ जाते हैं. तो आजकल वो भी करना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो गया. लेकिन आज एक पॉलिटिशियन है जो ये कार्य बड़ी धड़ल्ले से करता है इंडिया में. नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है वो बड़ी धड़ल्ले से करता है. तुमने गलत काम किया है तो नेम एंड शेम करेगा, और तुमने सही काम किया है तो उसको वो बड़ा चढ़ा के उसको अवार्ड भी दे देगा. ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल अवार्ड पे जाना मत. 2000 में समटाइम्स में भी जैसे प्रभु बोल रहे हैं कि गलत लोगों को भी अवार्ड दे दिया जाता है जैसे. तो so in this way actually Varnashram Dharma does this work. Right? Varnashram Dharma does this work. Society does this work. So Varnashram Dharma helps the society to inspire people and to impel people with the sense of honor. People in society, what do they want? They want sense of belongingness. Rather, they want to be on the virtuous side of the table rather than disrespect or dishonor from them. Right? Society in general wants possessiveness. They want belongingness rather than disrespect and from the society. So in this way, Varnashrama Dharma impels us to not to act wrongly. So what Krishna is giving the principle here that, this kirti which you have established by winning war, by going to Swargaloka, acquiring so many, shastra, all those will go in vain. And next slok is much, much more important. So this is why heroism, the principle of Kshatriya is added as a Swadharma for Kshatriyas. Heroism as a principle has been added in the Swadharma of a Kshatriya. And that is what Kshatriya has to perform, that Swadharma. He cannot run away from that. He has to act honorably. And that is why I said, if a sepoy, he has fought the war based on despite any odd situation, and if he has died in the war, he is definitely going to get his Swargaloka, or or if he has won the war, then he will be given badges by the government, like Shaurya Chakras by the So this way, Krishna in a way is channelizing the Varnashram Dharma by talking more on the social reality than the underlying subtle psychological reality. What is that psychological reality? Belongingness. I want belongingness. I want samman. So Krishna is channelizing that through Varnashram Dharma, which is the Swadharma, right? Which is the Swadharma. So people should perform their Swadharma in a glorious way so that they would be honored
And people should also feel pride. Okay, I am doing my duty. I am doing my work. You take that pride, right? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना? हम बोलते बड़े ऑफिस में बड़े शान से बोलते हैं तो होता ये है कि आप अपना स्वधर्म, आप अपना ड्यूटी निभाओ. ओके, बी प्राउड ऑफ इट. ओके, एंड not so much that you lose, you become arrogant. Okay, so this is the subtle difference. It is same thread, but it has so much of difference that has to be shifted through, and it has to be there, put there now. Mataji ko aap bhi kar sakte ho, Mataji kar, yeah, you have to shift. वो फ्लावर्स हटा के वहां पे शिफ्ट कर दो. So that's important. आप आगे आ जाइए प्रभु, थोड़ा इसलिए बोलेगा. किसी का कोई डाउट वगैरह? डाउट तो नहीं है, जैसे चीज सोच रहा था कि हम बात कर लें प्राइड की, कर लें, या हम जो फेम की बात कर लें, उस पर दूसरे पे डिपेंडेंसी ज्यादा है. Exactly, that will come in next sloka. That's what I wanted to take up today, but we'll not have time because we'll have that Guru Aarti also. So that's why I wanted to take this too today, but then it will take time. We have to glorify Maharaj also. Mataji will glorify Maharaj. So एक 15 मिनट उसमें भी लगेंगे, तो है ना, थोड़ा we will feel again above it's 1:30 and then people will feel again this thing. So that's what I thought. I took one. Otherwise, I wanted to take both the shlokas. So in the next shloka, he'll say very clearly कि जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे. So there we will speak about our actions and others' perceptions, our intentions and others' perceptions. Okay, we'll talk about it in next. I know, because these are interconnected topics sometimes, we just sometimes by just talking one side aspect, and people, that is where misuse Bhagavad Gita. They take one shloka in, I'm not taking in general, but in general people just consider this shloka and they do whatever they have to. And say, Krishna has asked to do this and do this, Baba. Then, there is some continuation always. So not to break any continuation, I gave you this kind of, like I have said that, why Krishna is channelizing Varnashram Dharma, why it is good in Varnashram Dharma that you have to be honorable, act honorably. So why? Because, that will come, and when you act, your action will speak. So then that action, what perception it will give to others, we'll discuss next time. Hare Krishna. शिला प्रभुपाद की जय. और कुछ है किसी को डाउट? किसी का कोई डाउट है? करता ले लीजिए प्रभु. भोग भी उधर लगा दीजिए शिवांगी एक बार, ऐसा फ्रॉम शिला प्रभुपाद टू आप. नहीं लिया टारगेट खत्म करवाना. खोल दिया है ना उसको कैन से, वो काम नहीं आएगा. करता ले लीजिए शिवा. माता जी आप रेडी रहिए, वहीं बैठोगे तो फिर माइक देना पड़ेगा मेरे को आपको. हाँ समझ गया, बराबर माइक. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अंदर से माइक लेके आना था उसका, वो करना था आपने को. तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, भजन कर लेते हैं, जय अनिलो कर लेते हैं, बिकॉज आज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरोभाव दिवस है. So we will take up one bhajan, which generally we take up when we when we are in separation with the Maharaj, when we are in separation with any Vaishnava, we take up this song. I have posted in the group. Mataji is not in the group, so I will anyway. You have this, Mataji? Jay Anilo? I'll just forward you. So we'll just take up this song, which will,
it's a kind of blessing, where we are feeling our, we are expressing our expressions through way of separation method. Like, see, we express our love either by meeting or in separation. So today Maharaj is in the Go Leela, not in our Bhautik Leela. That is the reason we are feeling separation, whereas he is already there. And in that separation, we sing this bhajan. So we will just take, right? So last time वो भूल गए थे, जरा ध्यान से. जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, 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 हेनो प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, 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 जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, एका काले को गेला गोरा नटराज, एका काले को गेला, एका काले को गेला गोरा नटराज, एका काले को
तेरा जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर पाषाणे कुटीबो माथा अनलिप शिवो पाषाणे कुटीबो माथा अनलिप शिवो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ते सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला ते सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला ते संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास ते संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास ते संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास पाइया कंदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,